डिस्कॉर्ड मध्ये चालू ठेव. हे डिस्कॉर्डला लावलं ना, हम्म, स्ट्रीम मध्ये पण दिसतंय. काम कर, ओबीएस ओपन कर तू. स्क्रीन शेअरिंग चालू राहू दे आणि ओबीएस ओपन कर. केलंय. तुला कॅमेरा ऑन ओबीएस करायचा आहे मध्ये का? असतं माझा कॅमेरा ऑन दिसतोय, तुझा दिसत नाही, असा विषय आहे. माझा दिसतोय, कुठं? माझं करतोय ते. मला काय डायरेक्ट इथे गेलं की स्टार्ट व्हर्च्युअल कॅमेरा म्हणायचं. काम कर तर मग राहू दे. काय कर, स्ट्रीमला ना तुझाच तेवढा कॅमेरा लाव कोपऱ्यात. हम्म, म्हणजे कसं होईल, मला बरं पडेल इथं स्क्रीन शेअर केलेलं बघायला. तिकडे लॅटेन्सी पडते चालतंय एक की सेकंड. चालतंय. तुझं तेवढं इकडं लाव. नाही असू दे की, इथं इथं मी हे करतो की, काय म्हणतात त्याला, पॉज करतो की, हे आपण दोघांचंच ठेवतो चालू. दिसतंय का? बघूया की, थांब विषय काय करता येते का. तर 3 डॉट वर आय गेस काय तर ऑप्शन आहे. त्या स्ट्रीमच्या 3 डॉट वर गेल ना, स्टॉप वॉचिंग. हे असे येते, युअर स्ट्रीम हॅज बीन हिडन असं दाखवतंय, पण ही आपल्याला पूर्णपणे काढता येत नाही, असा विषय. झालं तर ठीक, नाही तर तुझं तेवढं लाव, काही इश्यू नाही तसा. उलट इथं बघायला पण बरं पडेल. So you want to be a software engineer at Google? Go to algoexpert.io. Pick a question, read the prompt, write some code, run your JavaScript, an embarrassing toy language used exclusively to build things it's not supposed to. It was created by Brendan Eich in 1995, who was given requirements to build a language like Java, but for it only took him 7 days to execute flawlessly. It became an overnight dumpster fire, but shit really hit the fan in 2005 when Ryan Dahl made the epic mistake of bringing JavaScript to the server with Node.js. Just like Alfred Nobel and Dynamite, he would go on to apologize for his invention many years later. And it's my fault, and I'm very sorry. The language is designed for only one use case, to annoy people with browser pop-ups. But today, it's used to build memory-hogging desktop apps with Electron, janky mobile apps with React Native, and unreliable APIs with Express.js. No matter what you're trying to build, there are hundreds of different game-changing next-gen libraries to get the job done. That's because whenever a JavaScript developer encounters a problem, it will instinctively create a brand new framework and upload it to GitHub with a bunch of emojis in the README. In fact, there are so many NPM packages that Al Gore is now predicting the Arctic will be ice-free by 2013. You have stolen my dreams and my childhood. Unlike languages people actually like, JavaScript doesn't have a mascot, but they are working with David Cronenberg to design one. It's a loosely typed language, and by that, I mean completely detached from reality. When you add an array to an object, obviously it returns a string that says object. Now switch the order of the operands, and predictably it returns 0. If you want a good laugh for yourself, try adding two objects together. You'll get object. Now with that knowledge, what do you think two arrays will equal? Obviously an empty string. That makes total sense because the number 0 is equivalent to an empty array, and also equivalent to a string of 0. And that means the only possible sane conclusion is that a string of 0 is also equivalent to an empty array. But amazingly, it's not. Everybody knows you never go full retard. It got this way because Netscape did a focus group in the 90s with some homeless web developers they found on the street who thought 2 plus 2 should equal 22. And of course, that's why 2 minus 2 equals 0. When a language is this bad and this popular at the same time, it creates an ecosystem where libraries like IsOdd, which does exactly what the name implies, can get over 400,000 downloads per week. The fun thing about packages is that there's multiple module systems like CommonJS and ESM.
JSM, so you never know if the package you're installing is actually going to work. Now, if you do manage to build something with JavaScript, it'll probably never see the light of day, because then you have to learn module bundling with a tool like Webpack, and it's just not worth it, man. This has been my cathartic release from over 10 years of JavaScript development. Despite its problems, it's evolved into an awesome language in 2022, and I love programming with it. Today is Thanksgiving, and I'm extremely thankful for JavaScript because it puts food on my family. If you want to master the basics, all this reverse psychology should motivate you to buy my JavaScript course. And if you don't buy it, I won't make any money. Thanks for watching, and You know that thing where you design a website and then someone else makes it real using code? React.js, a half-baked functional UI library created at Facebook that's used by millions of developers because it has a cool name and logo. It was invented by Mark Zuckerberg in 2013. And that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry. React is simple, it's just JavaScript, bro, and that's why it gives you dozens of weird ways to solve the same problems, like functional and class-based components, hooks, forward ref, higher order components, mixins, render props, suspense, and so on. It's credited as the first declarative UI library, even though it took most of those ideas from AngularJS. Its killer feature, though, is the fact that you can write pure functional code. That is, until you want to do anything useful, in which case you'll need to write impure functions with state and effects. The beauty of this approach is that it makes simple things like reactive state much more complicated than they need to be, and that's what makes us feel like real developers. UseEffect is especially fun and was originally going to be called UseFootgun because it's a great way to introduce infinite loops, performance issues, and bugs that you'll never be able to figure out. Not to worry though, React is always evolving with revolutionary new features to monkey patch all the weirdness nobody saw coming on the previous release. Now, even though it has an extremely high learning curve, React is a library and not a framework, and that means to build something cool, you'll need to find and install hundreds of different packages, most of which were built by teenagers who stopped maintaining them years ago when they went off to college to learn a real language like C. To get started, create a new React app, then open up Google to enter the gates of tutorial hell. Notice how we start in strict mode. That's used to hide baggage from previous versions of the framework, library. Now in the code, we pretend we're doing functional programming by writing our components as functions. Classes are also possible, but they are literally the devil. Instead, we use these hooks everywhere that do the same shit classes do in a more magical, hipstery way. Templating is handled in JSX. It's a non-standard way to write HTML, which allows you to represent the UI entirely in non-portable callback hell. Now, we can all agree to hate CSS, but React will make you hate it even more when you try to style something on your own. Luckily, there are hundreds of CSS and JS libraries working on this problem as we speak. The extra complexity is worth it though, because React is blazingly fast, assuming you implemented all the weird tricks flawlessly. Life is about suffering. It's not supposed to be fun like Svelte, or fast like Solid, or reliable like Angular, or all of the above like Vue. The only thing that matters is React is the most popular, and that makes it undeniably the best, just like Microsoft makes the best operating system and McDonald's makes the best food. This has been me destroying my reputation with the React community in 100 seconds. React has been the most influential library in front-end web development for the last decade. Nothing's perfect, but it got to where it is today because it does a lot of things right, and for that it deserves our respect. Thanks for watching, and I will see you in the next one. AI is changing the game for app development. Firebase is here to help. हे लय भारी आहे. आताच आहे की नाही लय भारी आहे. बघितला बहुतेक मी बघितला ह्यो. Java, a boilerplate-driven language designed for writing verbose, object-oriented, instant legacy code. It came into being thanks to a relentless hype campaign अरे इंटरनेट गेलं काय माझं इंटरनेट गेलंय का लॅपटॉप लॅग खायला कळना मला. by Sun Microsystems in the middle of the dot-com bubble. It's kind of like the Macaulay Culkin of programming languages. It was Fast.com टाकून बघ. originally invented to create a better TV remote. Then it officially launched for public use in 1996, and nobody's bothered to update the website ever since. Regardless, Java has been running on 3 billion devices for the last 25 years, most of which are Blu-ray players. Its motto is write once, run everywhere, which developers know actually means write once, debug everywhere. Remember the Log4j fiasco? You can blame Java for that one. Still, Java has a great mascot, a little one-eyed monster named Duke, and people love to hate it so much that it's inspired an entire class of programming languages designed to make Java better, like Groovy, Clojure, Scala, and Kotlin, just to name a few. Unfortunately though, there is no cure. Java
Java also inspired JavaScript, a language that has taken developers 25 years to make halfway decent. And one time, Java even tried to steal JavaScript's job with applets on the web. Luckily, applets suck so bad, they made HTML, CSS, and JavaScript look like a good abstraction for building UIs. Now, when your company adopts Java, you'll also झालं नीट. I also think want to internetलाच adopt issue Oracle आलता. database, so you can spend the next 20 years talking about migrating to Postgres, while paying an ungodly amount of money that will be directly reinvested into these awesome sailing yachts. To get started, set aside a few days to install the JDK, JRE, and JVM on your machine. It's also recommended that you have a vertical monitor to read the error logs that are coming. Now, before writing any code, say this with me. Public static void main string args. Public static void main string args. Now, to say hello world, create a class. Java forces you into object-oriented programming, which means you'll want to read design patterns cover to cover before you go any further. Now it's time for your public static void main string args, and then finally system.out.println with hello world. As you can see, we get a lot more boilerplate than something like Python, which is a feature and definitely not a fundamental design flaw or anything. You'll want to start by writing one giant bloated class. Then, when your boss complains, break it into a hierarchy of deeply nested subclasses that will make it impossible to refactor. The next step is to rage quit from your job. Life is way too short to be coding in Java, man. And with that, I think I've lost enough subscribers Nice. for one video. There are only two kinds of languages, the ones people complain about and the ones nobody uses. Whether you love it or hate it, Java can get stuff done, and for that, it deserves our respect. Thanks for watching, and I will see you in the next one. What's up? Hi, Jira. We brought you here today to let you know that we made the business decision. I think माझा लॅपटॉप लॅग खायला लागला. रॅम चेक कर रॅम. बघ की हाय की रॅम हाय की सगळं व्यवस्थित आहे. तरी पण हँग मारायला. एवढं काय गेले 55 ला गेले. काय इश्यू? एवढं जात नाही रे कधी. बरं सांग हे बघू आपण. Neat code today. So today let's solve the problem. Find the city with the smallest number of neighbors. डीजे कसं अल्गोरिदम लावायचा करू शकतो आपण. आधी प्रॉब्लेम तर वाचू. का डायरेक्ट व्हिडिओच बघायचा. प्रॉब्लेम एकदा वाचू. काय करते तू? कोड लिहिलायस हे तू? नाही व्हिडिओ आहे का? सॉरी. वाचू एकदा आपल्याला काय कळते कसं अप्रोच वगैरे. Find the city with smallest number of neighbors at threshold distance. Okay, थांब. लीट कोडच हे करायला पाहिजे मला. थांब लाईट मोड मध्ये करायला पाहिजे. थांब 1 मिनिट. सेटिंग कुठं आहे जी? हे म्या झालं वाटतं. लाईट मोड मध्ये ऑन करायचं रे. कसं करायचं? कसल्या मोड मध्ये? लाईट मोड रे. थीम. ओके. थीम लाईट करायची. त्याच्यात थीम डिफॉल्ट असते ना. थीम मिळालीच नाही. अरे तुला कसं व्हाईट दिसतंय मला इथं ब्लॅक दिसतंय रे. ते म्हणतोय ब्राउझरची थीम काय आहे? डिफॉल्ट
ब्राउझरची थीम काय त्यावर नाही ना हे. ओके ओके. मला पण मी थीम हुडकत होतो. थीम नाही आहे याच्यात कुठं ऑप्शन. सिस्टीम डिफॉल्टच असते होते. अरे ही डायग्राम दिसत नव्हती रे म्हणून केलं. आर लागायला लय त्रास होते, डोळं सगळं पांढरं पांढरं इस. Find a city. There are n cities number. ओके म्हणजे 3 असणार आहेत. एक म्हणजे कुठून, दुसरं म्हणजे एजचं वेट किती आहे आणि तिसरं म्हणजे कुठं चाललंय. सोर्स सोर्स एज सॉरी सोर्स वेट आणि डेस्टिनेशन. सोर्स वेट डेस्टिनेशन असं आहे. सोर्स वेट डेस्टिनेशन रिप्रेझेंट अ बाय डायरेक्शनल म्हणजे बाय डायरेक्शनल आहे. म्हणजे आपण एका ठिकाणी म्हणजे ए टू बी असलं तर बी टू ए पण कन्सिडर करायचं. म्हणजे इथं ऍडजन्सी लिस्ट नाही, आपल्याला मॅट्रिक्स करायला पाहिजे कारण बाय डायरेक्शनल आहे. राईट. Weighted age between cities from नेबरिंग सिटी काढायची. with the smallest number of cities that are reachable through some path. ओके सो एज ही आहे आपला ह्यो ग्राफ आहे. ह्या ग्राफ मध्ये काय करायचं आहे आपल्याला, इंग्लिश मध्ये बोलूया ना. Okay, so we have this graph, right? I will just copy the image. I guess I'm unable to see your screen sharing. It's showing on YouTube only. You are not able to see my screen. Are you able to see it now? Yes. Now Okay. it's okay. काय ढगळं दिसायला. हे मी गेलास काय. एक मिनिट. Okay, now it is visible, right? Okay, so what we have to do is so we have distance threshold as 4 as given. We have distance threshold as 4 and we will be having this. Okay, so we have to get the
distance. So what we have to calculate? We have to go from each node to another node, right? We have to go through from a given node to all of the other nodes, and we have to calculate how much distance that particular path requires. So let's say we want to go from 0 to 2, so it requires 4. So it is as the same as threshold, right? And from if you want to go from 0 to 3, we have to go like this, either like this or all the way around here. So either 5 or either 7, but these two are not as same as threshold, so they crosses our threshold. That's why we do not consider 0 to 3, right? So what you want to do is uh, get all of the pairs which satisfies this condition. So first one will be 0 to 1, from 0 to 1, and from 0 to 1 we have got here, and 1 to 0, right? And 1 to 0 as well. After that we can go from we can go 0 to 2, and it will be valued of 4, so it is like valid. So we will go to 2, and also we will go from 2 to 0 as well. After that we can go from 2 to 3, 2 to 3, as well as 3 to 2. We can go from 3 to 1, 3 to 1. After that, after 3, we can go from 1 to 3, 1 to 2, like 1 to 2, as well as 2 to 1. Yeah, so these are all of, I guess, right? We can go from 0 to 1, 1 we have 3, 2, as well as 0. Yeah, so this is our graph, in which we can grow from 0 to 1 and 2, 1 to 0, 3 and 2. So whichever node has maximum number of neighbors in it, so we will consider for one has 3 nodes, right? It has 0, 3 and 2. For 0 it only has one node, which is 1. It doesn't, we cannot consider 2 because 2 is not directly connected to 2. 0 and 2 are not directly connected. They have to pass through 1 to reach each other. So we cannot consider 2. After that, we can consider all of these in 2, cause all of, no, not all of these. We can consider 3 and 1. And in 3 and 2, we can consider 2 and 1. So I think this is what they have given. Okay. So for 1 we have 3, for 0 we have 1, for 2 we have 2, and for 3 we have 2, right? This is what they have given. 0. Why didn't they consider 0? 0 also adds,
एक काम करू व्हिडिओज बघूया काय कळलं. At a threshold distance. And sometimes, to be honest, I wonder, why do people even watch my videos? And then I go and like look at the editorial and I see this behemoth of a solution. I don't know why they needed 84 lines to implement this. I mean, they do have some comments here and there, but still 84 lines. You can see my solution is going to be less than 30, and I think it's still pretty readable. So What? What did you say? काय म्हटलं ऐकलं नाही मी. Let's start, dude. you can be the Are you able ultimate to see judge, screen? but let's get into this problem, yes. which I think I actually solved 4 years ago. The idea is we're given a graph. I don't necessarily know if it's a connected graph or not, but in any case, it is a weighted graph. Each edge has a weight, and each edge I guess is I am undirected, unable so it to goes both ways. listen And the idea behind this play problem mine. is that Wait. consider for every single node, we want to Are you know able to from hear here, how many nodes could we reach without traveling a distance greater than 4? The max distance we can travel is 4. That's the max total distance. So you can see that one path we could take is this direction. That's 3. And then from here, we can go down to this guy. That's a distance of 1. So the total distance of this would be 4. At that point, we can't really go further unless maybe if this was a 0. But I don't think we have to worry about negative edges or anything like that, which is going to make our life easier. But we can't really go any further from there. So maybe from here we can go, but no, with a distance of 3 plus 4, this one is not going to work. This one is not reachable. So from this node, we can reach 2 other nodes. And you can kind of follow a similar process. So let's just record that. For 0, it's 1, or sorry, it's 2 nodes we can reach. And then from this guy, we can go here, we can go here, and we can go here as well. So actually from here, we can reach 3 nodes. So we'll say from 1, we can reach 3 nodes. And we can continue from here. We can go 1, 2, and 3. So actually 2 can also reach 3 nodes. And finally, 3 can go 1, 2. It can never reach this guy because that guy could never reach us either. So 3 will have a count of 2. Now, among all of these, we care about the ones that can reach the minimum number of nodes. These ones can reach 3, but these 2 can reach only 2 other nodes. Now, since there is a tie, how do we do a tiebreaker? Well, we choose the node that has a greater value. So among these 2, we would favor this one, and so this would be the result. That's the return value in this case, as you can see down here. So let's consider the brute force, because we can't really do much better than the brute force in this problem. And even the brute force might be hard enough for you. I think for a medium problem, this is not going to be trivial. So let's just kind of focus on that. There are multiple ways to solve this problem. Let's just first start with like DFS or BFS. Which one of these 2 algorithms do you think is going to be better in this case? Given a node, we want to know how many other nodes we can reach. We can travel in any potential direction. Generally speaking, BFS is better for that. Now, under the family of BFS algorithms, there is a very popular algorithm. You might have heard of it, and it might make you nervous just thinking about it. Dijkstra's algorithm. I cover it heavily, I think, in my advanced algorithms course. You can even implement it from scratch, I think, in one of the code sandboxes, which is free on NeetCode.io. Why exactly will that be helpful here? Because we have a threshold. Well, why is that important? Why is that a BFS thing? Why is that related to Dijkstra's? Well, consider this. From here, we're asking what are all the other nodes that we can reach? And we want to stay under this threshold. So if there is a path from 0 to 1, of course, we would want to find the shortest path there, because taking the long path to get there is useless, because then we might exceed the distance threshold and not recognize that we could indeed reach the other node from 0. That's the intuition behind this. Now, even if you recognize this, how are you going to solve the problem? Like, even if you don't know maybe how to even implement Dijkstra's algorithm, you still at the very least could probably give me the high-level solution, which is from every single node, we're going to run a Dijkstra's algorithm, like an augmented version of it, slightly modified, and we're going to determine like which are the nodes that we can reach. First of all, which nodes can we reach? And once we have those, we can obviously count those nodes
and then return that. So running a Dijkstra's algorithm from every single node as the source node will give us what are all the nodes that we can reach. Suppose we're given n nodes. What is the time complexity of Dijkstra's algorithm? Because that's going to be the overall time complexity. Well, this might make more sense in the code, but if you remember how Dijkstra's is implemented, we do use something called a heap. Specifically, we're going to use a minimum heap because it is a greedy algorithm. And the max possible size of that heap, you might first think it's going to be n, where n is the number of vertices, but let's say it's actually e, but e is never going to be greater than or equal to n squared, right? I think that roughly makes sense because for every edge, it can only be connected to every other node, right? So this is pretty fundamental. So if you believe this, you know that the max size of the heap is going to be e or n squared. So let's say n squared for a second. So pushing and popping from that heap of size n squared is going to be log n squared operation. If you remember how logs work, this too actually becomes a constant. So that's why we don't care if it's n squared or if it's n, because it will pretty much reduce to log n. So that's going to be the time complexity of pushing and popping from the heap. Now, to run a Dijkstra's algorithm, every node could be added to the heap, not just once, but actually n squared times, because again, that's the number of edges that we have in the graph. So like if we had like 5 edges connecting to this node, that node might be added to the heap that many times. So this is the time complexity of Dijkstra's algorithm a single time. So if I just, insert that over here, you can do the math and pretty much get that the time complexity is going to be n cubed log n. I don't think it makes a ton of sense to go further into this explanation. I think I probably have a much better video explaining exactly how Dijkstra's algorithm works. And I'm pretty sure it's free as well. So if you just go to neetcode.io, and I think under the basics tab, if you search for Dijkstra's, there should be a very detailed explanation exactly for how that algorithm works. I think you should start there because I'm going to run a slightly modified version of that algorithm right now. Before I implement the काय करायचं साऊंड नाही येत तेव्हाला पहिला बघायला पाहिजे. होय
the code, I wanted to quickly mention that right before I started recording this video, I was actually working on adding these animations to the DSA for Beginners course. You can see, I think that these are going to be very, very helpful for visualizing exactly how an algorithm works. So I have this right now for Matrix BFS. I also have some animations for how like an adjacency list traversal works. Pretty soon, I plan on adding animations for the advanced course as well. Don't quite have one for Dijkstra's algorithm right now, but hopefully next month we will. So first, Dijkstra algorithm. ह्यात तर काय दिसेना मला. ह्यात दिसते का बघ बरं तुला कुठं? काय बघायचं? Dijkstra algorithm रे. Dijkstra. हा हाय हाय. नाहीये. फ्री नाहीये. फ्री नाहीये algorithm. काय करायचं? त्याच्यात नाहीये, त्याचा व्हिडिओ नाही. तो म्हटला हाय फ्री पण नाहीये. नीट कोड आयो याच्यात आहे वाटतं रे. कशात? नीट कोड मध्ये दिलाय म्हणला ना वेबसाईट वर त्यांच्या. वेबसाईट वरच आहे की आता. ओके. सर्च कर बघू तिथं. Dijkstra असं असतं बाबा. नाही इथं तर नाहीये. दुसरं कुठलं तर बघूया का? बघायला तर लागणार आहे असं वाटतंय मला. आता प्रॉब्लेम नंबर किती आहे बघ बरं एकदा. हा वाला 1334. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 53 करने जा रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आज का प्रॉब्लम, जिन लोगों ने मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट देखा है उनके लिए आज का प्रॉब्लम इज़ नथिंग बट अ वेरी इजी प्रॉब्लम। उसका रीज़न आपको खुद अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, ठीक है। लीड कोड नंबर 1334 ऑलरेडी पढ़ाए हुए कंसेप्ट पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। एज इट इज बस उसको उतार देना है। फाइंड द सिटी विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नेबर्स एट अ थ्रेशोल्ड डिस्टेंस, ठीक है। देयर आर n सिटीज नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1 गिवन द अरे एजेस वेयर एज i इज इक्वल टू फ्रॉम 2, जहाँ पर फ्रॉम से 2 भी एक एज है और 2 से फ्रॉम भी एक एज है। बाई डायरेक्शनल एज है, देखो दे रखा है कि बाई डायरेक्शनल है और वेटेड एज है, मतलब उस एज का वेट भी दे रखा होगा कुछ, ठीक है। बिटवीन सिटीज फ्रॉम टू एंड गिवन द इंटीजर डिस्टेंस थ्रेशोल्ड, और एक डिस्टेंस थ्रेशोल्ड नाम का एक इंटीजर भी आपको दे रखा होगा अलग से, ठीक है। टोटल नंबर वर्टिसीज, सारे एजेस दे रखे हैं और एक डिस्टेंस थ्रेशोल्ड दे रखा है। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना। रिटर्न द सिटी विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिटीज दैट आर रीचेबल थ्रू सम पाथ एंड हुज डिस्टेंस इज एट मोस्ट इतना, ठीक है। आपको वो सिटी निकालना है जिससे सबसे कम सिटीज रीचेबल हों। एक ऐसा सिटी, मान लेते हैं ये सिटी आपका, इससे सबसे कम सिटीज रीचेबल हों, और जो रीचेबल होंगे भी उनका डिस्टेंस जो है ना इस सिटी से लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस थ्रेशोल्ड होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल से देखेंगे। और हाँ, इफ देयर आर मल्टीपल सच सिटीज रिटर्न द सिटी विद द ग्रेटेस्ट नंबर, ओके। नोटिस दैट द डिस्टेंस ऑफ अ पाथ कनेक्टिंग सिटीज ING इज इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस वेट्स अलोंग दैट पाथ। ये तो आपको पता होगा। जैसे ये जो एज दे रखा है एक्चुअली में इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं किस सिटी से कौन कौन सिटी पर आप जा सकते हो। जैसे मान लेते हैं ये जो 0 वाला सिटी है, ये वाला, इससे आप कहाँ जा सकते हो। इससे आप 1 जा सकते हो, 3 भी जा सकते हो, 2 भी जा सकते हो। बट हमें क्या करना है, डिस्टेंस देखना है कि डिस्टेंस भाई इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 4 ही होना चाहिए। तो 0 से आप 1 जा सकते हो ना, आप ऐसे एक टेबल टाइप बना सकते हो कि 0 से 1 जा सकते हो। डिस्टेंस देखो तो 3 ही है, मतलब 3 पे ही आप पहुँच सकते हो, ठीक है। तो ये एक वैलिड सिटी हो जाएगा इससे 0 के लिए, क्योंकि देखो डिस्टेंस थ्रेशोल्ड से बड़ा नहीं है इसका डिस्टेंस, ठीक है। 0 से आप 2 भी जा सकते हो, देखो तो 3 और 1 4 दूरी पर 4 डिस्टेंस पर जा सकते हो। 0 से आप 2 जा सकते हो पर डिस्टेंस ऑफ 4।
0 से आप 3 भी जा सकते हो। अगर देखा जाए तो ये बघा पाथ लागलेस पकड़ोगे काय? तो 3 + 4 7 हो जाएगा। दिसते का? ओके. एंड हुज डिस्टेंस इज एट मोस्ट इतना। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं किस सिटी से कौन कौन सिटी पर आप जा सकते हो। जैसे मान लेते हैं ये जो 0 वाला सिटी है, ये वाला, इससे आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। इससे आप 1 जा सकते हो, 3 भी जा सकते हो, 2 भी जा सकते हो। बट हमें क्या करना है, डिस्टेंस देखना है कि डिस्टेंस भाई इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4 ही होना चाहिए। तो 0 से आप 1 जा सकते हो ना। आप ऐसे एक टेबल टाइप बना सकते हो कि 0 से 1 जा सकते हो, डिस्टेंस देखो तो 3 ही है, मतलब 3 पे ही आप पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये एक वैलिड सिटी हो जाएगा इससे 0 के लिए, क्योंकि देखो डिस्टेंस थ्रेशोल्ड से बड़ा नहीं है इसका डिस्टेंस। ठीक है, 0 से आप 2 भी जा सकते हो, देखो तो 3 और 1 4, 4 दूरी पर जा, 4 डिस्टेंस पर जा सकते हो। 0 से आप 2 जा सकते हो बाय डिस्टेंस ऑफ 4। 0 से आप 3 भी जा सकते हो। अगर देखा जाए तो ये पाथ पकड़ोगे तो 3 + 4 7 हो जाएगा, और ये पाथ पकड़ोगे तो 3 + 1 4 1 5 हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा है हमारे इस डिस्टेंस थ्रेशोल्ड से। ठीक है, तो 0 से अगर आप 3 जाओगे तो आपको मिनिमम पड़ेगा 0 से 3 जाने पे 5 पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 + 1 + 1 5 ये पड़ रहा है भाई। मिनिमम ही जो है वो डिस्टेंस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तब तो ये मेरे काउंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो 0 से कितने सिटीज़ हैं जो रीचेबल हैं विद इन दिस थ्रेशोल्ड? सिर्फ 2 सिटीज़ है रीचेबल, यानी कि 1 और 2 जो कि रीचेबल है। तो जिस तरह हमने यहाँ पर 0 का निकाला ना, 0 का 1 से डिस्टेंस, 0 का 2 से डिस्टेंस, 0 का 3 से डिस्टेंस। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब हम 0 से 3 का डिस्टेंस निकाल रहे थे तो 0 से 3 पहुंचने में 2 रास्ते थे, एक तो ऐसे जा सकता था और एक ऐसे जा सकता था, राइट। तो उसमें से हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया, क्योंकि ऑब्वियस बात है मुझे ये देखना ना कि इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्यों चुनोगे, तो मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चुना, 3 4 5। इवन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी देखो मेरे थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, तो एनीवेज ये तो मेरे रेंज में है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए ये तो गया। सिमिलरली अगर अब हम 1 का निकालेंगे बाकी सारे नोड से दूरी, जैसे 1 का निकाल रहे हैं, 1 का 0 से भी दूरी निकालना पड़ेगा, 1 का 2 से, 1 का 3 से भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने 0 डाला तो नहीं है, एक 0 के लिए भी कॉलम बना देते हैं। ठीक है, और इसी तरह सारे नोड्स का सारे नोड्स से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के इस मैट्रिक्स में फिल कर देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर एक 0 वाले कॉलम भी ऐड कर दिया। तो 0 का 0 से दूरी तो हम क्यों ही देखेंगे, हमें तो नेबर का दूसरे सिटी से दूरी देखनी है ना 0 की। तो 0 का 1 से देखेंगे, 2 से 3 से देखेंगे। 3 वाला तो आउट ऑफ थ्रेशोल्ड हो गया, छोड़ दो इसको। अब 1 का देखते हैं, 1 का 0 से दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी क्या है, 3 है। 1 का 1 से देखना नहीं है। 1 का 2 से शॉर्टेस्ट दूरी 1 है। 1 का 3 से शॉर्टेस्ट दूरी देखो ये दिख रहा है, 1 + 1 2 दिख रहा है ना। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, 1 जो है इससे 3 सिटीज़ जो हैं नियरेस्ट हैं। ठीक है, और जो कि इस थ्रेशोल्ड के अंदर भी है उनका दूरी। ठीक है, देखो 3 सिटीज़ हैं। ओके, अब इसी तरह 2 और 3 का भी मैं भर देता हूँ यहाँ पर। 2 का भर देता हूँ कि 2 का 0 से दूरी कितना होगा, 4। 2 का 1 से दूरी 1 होगा। 2 का 2 से दूरी नहीं निकालना है, 2 का 3 से दूरी 1 होगा। ठीक है, अब देखो 2 से भी 3 सिटीज़ ऐसे हैं जो 3 सिटीज़ ऐसे हैं जो कि लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड पर है। अब 3 का देखते हैं, 3 का 0 से दूरी कितना है, 3 का 0 से दूरी 7 है। ठीक है, इसको तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि थ्रेशोल्ड से भी ज़्यादा है। 3 का 0 से दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 है ना, एक ये है, 1 2 3 4 5, बट ये भी देखो 4 से बड़ा है, तो ये एनीवेज मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। 3 का 1 से दूरी है मेरा 2 है, शॉर्टेस्ट दूरी देखो ये वाला है ना। 3 का 2 से दूरी 1 है, 3 का 3 से दूरी नहीं निकालना। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर कि भाई दो ऐसे, ये 0 का अगर बात करें तो इससे 2 सिटीज़ रीचेबल हैं नियरेस्ट में। ठीक है, ये नहीं होता ना, नंबर सिटी डेट आर रीचेबल थ्रू दिस विद इन दिस थ्रेशोल्ड डिस्टेंस। 2 सिटीज़ हैं, और इसके लिए 3 सिटीज़ हैं, 1 2 3, इसके लिए भी 3 सिटीज़ हैं, 1 2 3, इसके लिए भी 2 सिटीज़ हैं। ठीक है, और मुझे उन सिटी के बारे में निकालना जो मिनिमम नंबर ऑफ सिटीज़ हो रीचेबल वहाँ से। तो देखो तो 0 के लिए सिर्फ 2 ही सिटीज़ थे, 3 के लिए भी सिर्फ 2 ही सिटीज़ थे, तो इन दोनों में से कोई मेरा आंसर होना चाहिए। तो प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, अगर दोनों में टाई हो चुका है तो जो उस सिटी को भेजना जिसकी नंबरिंग ज़्यादा है, तो इसको मैं भेजूंगा, तो इसीलिए मेरा आंसर 3 है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब अप्रोच तो बड़ा सिंपल हो गया देखा जाए तो, है ना। बहुत सिंपलेस्ट थॉट प्रोसेस मैं भी यहाँ लगाने वाला हूँ कि समहाउ अगर हमने एक ऐसा मैट्रिक्स फिल कर दिया ना, तो बस मुझे क्या करना है, नॉर्मल काउंट करना है कि भाई कितने सिटीज़ है। इसके पास 2 सिटीज़ है विद इन थ्रेशोल्ड, इसके बाद 3 सिटी है विद इन थ्रेशोल्ड, इसके पास 3 सिटी विद इन थ्रेशोल्ड, इसके पास 2 सिटी विद इन थ्रेशोल्ड। तो मिनिमम काउंट मुझे 2 दिखा कि 2 सिटीज़ हैं मिनिमम। ठीक है, लेकिन किसके किसके पास है, 0 के पास 2 सिटीज़ हैं विद इन थ्रेशोल्ड, 3 के पास भी 2 सिटीज़ है विद इन थ्रेशोल्ड, तो मेरा आंसर 3 होगा क्योंकि इसका लार्जर नंबर है। ठीक है, तो बस समहाउ मुझे ये टेबल भरना है, और याद करो इस टेबल में क्या भर रहे थे, हर नोड से हर दूसरे नोड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो यहाँ पर बात कहाँ पर आ गई, शॉर्टेस्ट पाथ। और जिन लोगों ने मेरा ग्राफ कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट देखा है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का मैंने ऑलरेडी कई सारे वेज बता रखे हैं। सबसे पहला शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग डाइक्स्ट्रा। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो वीडियो बंद कर दो और जाके, अगर आपने डाइक्स्ट्रा ऑलरेडी पढ़ रखा है तो इंप्लीमेंट करो, आप कर लोगे, आई एम प्रीटी श्योर। दूसरा मैंने क्या पढ़ा रखा है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। तीसरा मैंने पढ़ा रखा है फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम। मैं तीनों का कोड ना कॉपी पेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं यूजिंग सेम कोड इनको सॉल्व कर रहा हूँ। मैं दोबारा इन तीनों को डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने तीनों नीट कोड ना हिंट मध्ये ओके में बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। तो मैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है, तीनों को पढ़ो और तीनों तरीके से जरूर से बनाना।
ठीक है, तीनों तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप बनाओ, लेकिन अभी मैं आपको तीनों का कोड करके जरूर से दिखाऊंगा ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए और आपका भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, बट अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा स्टेप क्या होने वाला है वो मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि हमारा स्टेप्स क्या होगा। कि सबसे पहले तो ये जो मैट्रिक्स है, याद है, शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स बोल सकते हो उसको। एक मैट्रिक्स मैंने बनाया जिसका नाम मैंने रखा शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स। अभी शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स क्या स्टोर करता है, हर एक वर्टेक्स से हर दूसरे वर्टेक्स का जो कि उसके बराबर नहीं होना चाहिए, बस वो वर्टेक्स 0 से 0 को थोड़ी निकालोगे, 1 से 1 को नहीं निकालोगे, हर वर्टेक्स से हर दूसरे वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हो, है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स में हम वही फिल करने वाले हैं। अब आप शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स फिल करने के लिए कुछ भी यूज कर लो, डाइक्स्ट्रा, बेलमैन या फ्लॉयड वार्शल, कोई भी यूज कर लो। तीसरा लास्ट में क्या करेंगे, जब शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स फुल हो जाएगा यूजिंग दीज 3 एल्गोरिथम्स, कोई भी एल्गोरिथम यूज कर लो। शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स मान लेते हैं आपने फिल कर दिया, आपने एक टेबल ऐसा बना दिया। अब इस टेबल पे इटरेट करके, इटरेट इन शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स, इसका नाम एसपीएम रख देते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स। इटरेट इन एसपीएम शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स टू फाइंड द रिजल्ट, टू फाइंड द सिटी, जो आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, नॉर्मल सा चीज़ है। ओके, अब एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो देखो ये तीनों मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम पर 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। मैंने बेलमैन-फोर्ड पढ़ा रखा है, फ्लॉयड वार्शल पढ़ा रखा है, तीनों को डिटेल में पढ़ा है। देख लो लंबे लंबे वीडियोस हैं, तो पहले आपको कंसेप्ट समझना चाहिए, उसके बाद उससे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो पहले इन चीज़ों को जरूर से पढ़ लेना। अब एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूँ, वो आपको ऑलरेडी पता होगा बट स्टिल मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम पता है क्या है, ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। पता है इसका मतलब क्या होता है कि एक बार डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम कॉल करोगे ना तो एक सोर्स का आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल पाओगे बाकी सारे नोड से। मतलब ये जो 2D मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, जो मैंने अभी फिल करके दिखाया था, कि अगर आपको इस 0 का निकालना था हर बाकी नोड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो एक बार डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम 0 के लिए कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि 0 उस वक्त मेरा हे होते ना, काय म्हणतात त्याला, असं डीप 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 जात जाते आणि सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे थोडक्यात रिकर्जन बॅक ट्रॅकिंगच होते ना ह्याच्यात डिस्कस्टर मध्ये रे। सोर्स होगा और इसे सोर्स से बाकी सारे नोड्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ये और ये। फिर सिमिलरली 1 का फिल करने के लिए 1 को सोर्स मानेंगे और 1 के लिए दोबारा हम लोग शॉर्टेस्ट डाइक्स्ट्रा कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये फेल हो जाएगा। सिमिलरली 2 के लिए दोबारा डाइक्स्ट्रा, 3 के लिए दोबारा डाइक्स्ट्रा कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है। मतलब एक सोर्स का एक बार में निकाल पाता है बाकी सारे वर्टिसेस से शॉर्टेस्ट पाथ। 0 का बाकी सारे वर्टिसेस से शॉर्टेस्ट पाथ एक बार में निकाल लेगा, 1 का बाकी सारे वर्टिसेस से एक बार में निकाल लेगा, एंड सो ऑन। तो देख लो हर एक वर्टेक्स के लिए आपको डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम कॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, एक बार में डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम एक ही सोर्स का निकाल पाता है शॉर्टेस्ट पाथ विद ऑल द अदर वर्टिसेस। ठीक है, सिमिलरली ये भी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है, बेलमैन-फोर्ड। तो बेलमैन-फोर्ड के भी वही करना पड़ेगा, हर एक वर्टेक्स के लिए आपको बेलमैन-फोर्ड कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, बट आपको अच्छे से याद होगा, अगर आपने मेरा फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम देखा है, तो फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम बड़ा चिल टाइप का एल्गोरिथम है। वो एक बार में एक मस्त मैट्रिक्स लेता है, ठीक है, और एक बार में पूरा मैट्रिक्स को ही अपडेट मार देता है। ठीक है, भले O ऑफ n क्यूब लगता है इसमें, बट अभी मैं आपको कोड दिखाऊं तो आपको समझ में भी आ जाएगा। रिमाइंड भी, जिन लोगों ने देख रखा वीडियो उनको दोबारा रिवीजन भी करवा दूंगा, बट जिन लोगों ने नहीं देखा वो जरूर से देख लेना। ठीक है, तो फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम एक बार में सभी का निकाल देता है, मतलब सारे वर्टिसेस का एक बार में ही निकाल देता है। ठीक है, तो बार बार कॉल नहीं करना पड़ता, एक ही बार हम फ्लॉयड वार्शल कॉल करेंगे और ये मेरा पूरा मैट्रिक्स को फिल करके दे देगा मुझे। ठीक है, बट इस डाइक्स्ट्रा और बेलमैन-फोर्ड को से जब सॉल्व करेंगे तो बार बार कॉल करना पड़ेगा हर रो को फिल करने के लिए। इस रो को फिल करने के लिए फॉर सोर्स 0, इस रो को फिल करने के लिए, ये वाले रो को फिल करने के लिए दोबारा डाइक्स्ट्रा कॉल करूंगा, उस वक्त सोर्स ये होगा 1। फिर इसके लिए दोबारा डाइक्स्ट्रा कॉल करूंगा, उस वक्त सोर्स क्या होगा, ये 2 होगा। फिर इसके लिए दोबारा कॉल करेंगे, उस वक्त सोर्स होगा 3, है ना। तो हर बार हर किसी को सोर्स मान के डाइक्स्ट्रा कॉल करेंगे या फिर बेलमैन-फोर्ड कॉल करेंगे, तब एक एक रो फिल होगा एक बार में। ठीक है, ओके। तो अभी सारे कोड मैं आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगा दिखा के, और मैं खुद टाइप करूंगा ताकि मेरा भी रिवीजन हो। ठीक है, फ्लॉयड वार्शल भी दिखाऊंगा, बट आपको ये समझना जरूरी था कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है ये दोनों एल्गोरिथम, डाइक्स्ट्रा और बेलमैन। तो बार बार कॉल करना पड़ेगा, मतलब लूप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। i = 0 से लेकर i <n तक, है ना। सबको एक एक बार करके सोर्स मानेंगे और डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम कॉल कर देंगे कि इस बार सोर्स मेरा i है, या फिर बेलमैन-फोर्ड कॉल कर देंगे, इस बार सोर्स मेरा i है, एंड सो ऑन। ठीक है, बट यहाँ पर चल रहा है, मैंने ये मैट्रिक्स बना ली, बस ये मैट्रिक्स भेज दूंगा फ्लॉयड वार्शल को कि भाई मेरा ये वाला मैट्रिक्स फिल करके ला दो, दैट्स इट। ठीक है, तो कोड में आपको दिख जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, बट कोड जो मैं बताऊंगा वो एक्जैक्टली यही सब कोड होगा जो मैंने यहाँ पर पढ़ा रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलो अभी तीनों अप्रोच को करेंगे लाइन बाय लाइन और इंश्योर करेंगे एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो और यही स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, और इन तीनों अप्रोचेस से बनाएंगे, शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स को फिल करेंगे और लास्ट में इटरेट कर लेंगे शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स में टू फाइंड आवर सिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक शॉर्टेस्ट पाथ नाम का मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम क्या रखते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स, SPM रख देते हैं। ठीक है, जिसमें सारे नोड्स से सारे दूसरे नोड्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ लिखा होगा। ओके, वेक्टर ऑफ इंट n, और अभी मुझे नहीं पता किसी का भी डिस्टेंस, तो int _max डाल देते हैं। ठीक है, या तो कोई बहुत बड़ा वैल्यू डाल दो, 1e⁻9 + 7। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स मुझे फिल करना है। ठीक है, और आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि ith नोड खुद की दूरी क्या होती है, 0 होती है। ऑब्वियसली आपको पहले ही से पता है, हर नोड का अपने खुद से दूरी कितना होता है, 0 होता है, तो वो पहले ही फिल कर देते हैं। i <n i++
SPM ऑफ I से I का दूरी कितना, 0 होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला था कि इस शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स को मुझे फिल करना है, SPM को मुझे फिल करना है यूजिंग डाइक्स्ट्रा। तो डाइक्स्ट्रा के लिए ऑब्वियसली आपको एडजेसेंसी लिस्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो पहले एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, ADJ मैंने बना लिया यहाँ पर। अब एडजेंसी लिस्ट को फुल करना होगा एज में इटरेट मार के। ठीक है, तो एज पे इटरेट मारते हैं, ऑटो एंड एज इन एजेस इंट यू इज इक्वल टू एज ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू एज ऑफ 1, और वेट दे रखा है एज ऑफ 2 पे, इंडेक्स नंबर 2 पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो और दे रखा कि बाई डायरेक्शन है, मतलब ADJ से u डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। ठीक है, इसका v से भी दूरी है, कनेक्शन है, और ADJ ऑफ v डॉट पुश अंडरस्कोर बैक इसका u से भी कनेक्शन है। बट याद करो मैंने क्या बोला था, वेटेड ग्राफ है यहाँ पर, तो u से v की दूरी क्या है वो तो लिखना है, बट वेट कितना वो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी डायग्राम इंप्लीमेंट करना है, तो वहाँ पर वेट की जानकारी आपको चाहिए होगी, तो यहाँ पर भी WT करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो वेक्टर ऑफ इंट नहीं है, मतलब अनऑर्डर्ड मैप इंट तो है ही, मतलब की मेरा इंट है, बट जो वैल्यू देख रहे हो वेक्टर ऑफ पेयर है वो v कॉमा पेयर, v कॉमा वेट है। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर ऑफ पेयर होगा यहाँ पर, तो बार बार पेयर लिखना ना पड़े, इसलिए मैं इसको यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ, हैश डिफाइन। ठीक है, क्या नाम दे दूँ, P दे देता हूँ, है ना, हैश डिफाइन P रख देता हूँ, और ये किसके लिए, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, जहाँ जहाँ पर मुझे पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट लिखना पड़ेगा उसकी जगह मैं P लिख दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर मैं वेक्टर ऑफ P लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने P लिख दिया। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ रहा है। अब इसके बाद बहुत सिंपल सा काम था, मैंने क्या बोला था कि हर सोर्स से बाकी सारे सोर्सेज का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो फॉर इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस। ठीक है, तो मैं क्या कॉल करने वाला हूँ, डाइक्स्ट्रा कॉल करूंगा और बता दूंगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस n है, ये मेरा एडजेसेंसी लिस्ट है, और मेरा सोर्स है I। ठीक है, मेरा सोर्स है I, मुझे इससे बाकी सारे नोड्स का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो याद करो, जब इससे बाकी सारे नोड्स का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे तो कौन सा रो भरेंगे हम लोग, ith वाला रो भरेंगे, राइट, क्योंकि ये मेरा सोर्स है अभी। तो एक काम करते हैं ना, ये ith रो भेज देते हैं ना शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स का, SPM का ith रो भेज दिया मैंने, और इसी में अपडेट कर देंगे इस I का इन सारे नोड्स से जितना दूरी है। देख लो, SPMI का मतलब क्या हुआ कि रो, पूरा रो ही मैंने भेज दिया उस मैट्रिक्स का, और डाइक्स्ट्रा यूज करके उस रो को वहाँ फिल कर देंगे, तो वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाई रेफरेंस पास करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर डाइक्स्ट्रा हम लोग लिख लेते हैं अपना, है ना। ठीक है, तो डाइक्स्ट्रा वही जो हमने खानदानी तरीका पढ़ा है हमने, जो डाइक्स्ट्रा का कोड है, वॉइड डाइक्स्ट्रा, क्या क्या भेज रहे थे इसमें, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, और अनऑर्डर्ड मैप भेज रहे थे ना, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ P, है ना, एंड ADJ एडजेसेंसी लिस्ट भेज दिया मैंने, और इसके बाद वेक्टर ऑफ इंट एंड, याद करो उसी रो को मैंने भेज दिया था, ताकि उसी रो को हम लोग यहाँ अपडेट कर देंगे, तो उसका नाम यहाँ पर रिजल्ट रख देते हैं। ठीक है, और याद करो इंट मेरा एक सोर्स होता था, मतलब सोर्स याद है, ये I मेरा सोर्स है ना, इसको मैंने भेजा कि इससे मुझे बाकी सारे नोड्स का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, और इस रिजल्ट वाले वेक्टर में भर देना। और ये रिजल्ट याद है क्या था, ये वही वाला रो है, इस ith के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है ना, वही वाला रो है ये, तो वो फिल हो जाएगा। ठीक है, और बाई रेफरेंस भेजा है मैंने, तो यहाँ पर जो चेंजेस होंगे रिजल्ट में वो इस शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स I में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब तो इसके बाद तो पूरा रटा हुआ है हमारा ना, इतनी बार हमने ये लिख रखा है। डाइक्स्ट्रा कर तुमको प्रायोरिटी क्यू याद करो, इसमें हमारा प्रायोरिटी क्यू में क्या है, पेयर है तो P ले लेंगे। ठीक है, वेक्टर ऑफ P ग्रेटर P। ठीक है, अब देखो, जिन लोगों ने मेरा ग्राफ कंसेप्ट एंड क्वेश्चन का प्लेलिस्ट नहीं देखा उनको थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, बट प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जरूर से देखना, ग्राफ कंसेप्ट एंड क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छे से मैंने वहाँ समझा रखा है। PQ.push, सबसे पहले यहाँ पर हम सोर्स को डाल देंगे कि भाई 0 दूरी है सोर्स का सोर्स से, और क्या, ठीक है, वेट इतना है। अब एक और काम हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि जो रिजल्ट है मेरा, है ना, ये जो रिजल्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल कर देंगे, फिल रिजल्ट डॉट बिगिन रिजल्ट डॉट इंड। ठीक है, इसमें इंट अंडरस्कोर मैक्स फिल कर देंगे। याद करो डाइग्राम में यही तो करते थे, पहले इंट मैक्स फिल कर दिया, उसके बाद उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस फिल करते रहेंगे। और आपको ये तो पता होगा कि सोर्स का सोर्स से दूरी कितना होता है, 0 होता है, तो ये मैंने अभी फिल कर दिया। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सोर्स टू इटसेल्फ इज 0। ठीक है, अब वही पुराना प्रायोरिटी क्यू जब तक खाली नहीं हो जाता हमारा डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम चलता रहेगा। ठीक है, इंट सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं, PQ डॉट टॉप डॉट फर्स्ट इंट नोड क्या है, PQ डॉट टॉप डॉट सेकंड। ओके, अब PQ डॉट टॉप कर देते हैं। बघ इथं काय केलं त्यांनी पहिल्यांदा, इंग्लिश मध्ये बोलायचं लक्षात राहत नाही माझ्या. Yes. Okay, so firstly what they did, unordered map is a adjacency list, and this Yes. result vector is surface path distance matrix rows for this particular source. Per row. Yeah. So we will firstly consider that distance from source to each and every destination is maximum. Okay, because we have Yes. this is minimization problem, that's why we are consider maximum. And after that, what we are doing, PQ dot push in priority queue, we are pushing the, for this particular S, we are having 0 distance to where the destination will be S. So from source to destination both are S and their distance is 0.
So this is what we are doing on line number 7. But there are okay. In priority queue, Hmm. we have one first pair, right? Yeah. First there is a pair. Yeah. Second there is a Vector. vector of pairs. Right. And at the third, it's greater means in reverse order, right? Yeah. Means highest will be at the top. Yeah. Okay, so at while we are pushing 0s, we are pushing in first P. We are pushing in P, right? Yeah. Okay, so first we are pushing the vertex and its S means S initial means node. source. S means source. Yes, source initial node, and its P means 0. What is 0? That Distance. okay, its Distance own from source to distance. source. Yeah, source to source is 0. Okay, then we have fill method. Yeah, fill method, what it does is it like Okay, puts the fill the int max values value. in Yeah, the it puts fill the the int value. max value in every given iterator. Okay. And the result of S is 0. Okay. Result. So this is So what it considers. yeah, Result of have S we is 0. is the result just go back where it's called Dijkstra, little bit Here. down. It is for each. Okay. You can see we have called it for each and every node. So SPM of I is given. Okay. Yeah, SPM of SPMOI I is means given. result. Means the Okay. row. Yes. We Vector. have talked. Okay. Fine. Okay. Got it. Okay. डायरेक्टर में यही तो करते थे प्रायोरिटी क्यू वाले दूरी निकाल लेते हैं pq.top.first int node क्या है Okay, so we are giving dot first because we have pair. So in order to like deconstruct the pair, we have to give first and second. First and second, yes. pq.top.second ओके अब pq.top कर देते हैं सबसे पहले उनके नेबर्स को निकालते थे ठीक है ऑटो एंड p इन एडीजे ऑफ नोड याद करो वेक्टर ऑफ पेयर होता था ना जितने भी नेबर्स होते थे इंट एडीजे नोड निकाल लेते हैं p डॉट फर्स्ट ठीक है इंट और उसका वेट निकाल लेते हैं ना वेट या तो डिस्टेंस जो भी बोल लो डिस्टेंस इज इक्वल टू p डॉट सेकंड है ना याद करो वेक्टर ऑफ पेयर होता था ना तो पेयर एक एक करके सारे पेयर पे इटरेट मार रहे हैं एडीजे नोड और डिस्टेंस का ठीक है तो हम लोग क्या चेक करते थे याद करो कि अभी इस नोड पर आने में मुझे d दूरी लगा था राइट तो उस दूरी पर अगर मैं ये डिस्टेंस ऐड करूं तो मैं इस नेबर पे पहुंच सकता हूं ये जो भी नेबर मेरा एडीजे नोड है ना और अगर मैं वहां पहुंच सकता हूं और अगर वो लेस देन मेरा ऑलरेडी अगर निकाल रखा है मैंने एडीजे नोड का जो भी वैल्यू ऑलरेडी होगा उससे कम हुआ तो ऑब्वियसली मुझे अपडेट करना पड़ेगा उसको एडीजे नोड इज इक्वल टू डी प्लस डिस्टेंस तब ताकि मैं इसको शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकूं उस नोड तक पहुंचने के लिए ठीक है और पीक्यू में मैं अब इसको पुश कर दूंगा प्रायोरिटी डॉट पुश एडी सॉरी डिस्टेंस क्या है मेरा डी प्लस डिस्टेंस है ना ठीक है और एडीजे नोड है यही था पुराना घिसा पिटा खानदानी अपना डाइक्सरा वाला Here. Okay. He has written inside for. We have to return it inside if, right? कोड है वो मैंने एज इट इज चिपका दिया बस यहाँ पर ठीक है ओके तो मैंने डाइक्सा भी कॉल कर दिया है उसके बाद याद करो हमारा लास्ट स्टेप क्या होता था हमारा लास्ट स्टेप होता था सिंपली एक फंक्शन मैंने बोला था लिख देंगे फाइंड द सिटी बाय इटरेटिंग ओवर जो मेरा एसपीएम है शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स उसमें ढूंढ लेंगे कि कौन सा ऐसा सिटी जिसका मिनिमम नंबर ऑफ सिटीज है जो विद इन दिस थ्रेशोल्ड है उसके लिए एक फंक्शन लिख देते हैं रिटर्न फाइंड द नहीं क्या नाम रख दे फाइंड रिजल्ट सिटी ठीक है इसमें हम क्या क्या पास करेंगे सबसे पहले एन पास कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ कितने नोड्स हैं हमारे रिजल्ट देते हैं एसपीएम है शॉर्टेस्ट भी कॉल कर Okay, so this is. Can you just pause for a second? Yeah. Okay. So this is this algorithm. So in priority queue, for each adjacency list, right? We are First we are checking all. Yeah. We are checking if the, I mean we distance are of calculating. that one. Yeah. First of all, we are having
every entry in a particular row as maximum. After that, we are calculating the distance from this node to this path via one path, then second path, then third path. Then after that, if we find out that the value in already given for that particular source, if we are having lesser, so we will update with the current path. So we are overriding for each and every adjacency list, for each and every entry in the adjacency list. And here it should have been if, I guess, yeah, for sure it should have been a if. And if that's the Okay, in case, for true, I guess it's, or what? Or I you don't think. mistakenly type. Yeah, he has mistakenly type, I think. So yeah, so this was Got all it, about Digivista. So I think we can go back to NeetCode, right? Yes. Start solving on Google Cloud with immediate access to free credits, plus free usage of products and services. As a new user, you'll receive $300 in credits for the first 90 days, risk-free. You won't get charged when your trial ends unless you manually upgrade your account. Plus, the free tier lets new and existing users use many of Google Cloud services entirely for free. Okay, what the hell? I think my keyboard is jammed up. But let's say it's actually e. But e is never going to be greater than or equal to n squared, right? I think that roughly makes sense because for every edge, it can only be connected to every other node, right? So this is pretty fundamental. So if you believe this, you know that the max size of the heap is going to be e or n squared. So let's say n squared for a second. So pushing and popping from that heap, it becomes that many times. You should start there because I'm going to run a slightly modified version of that algorithm right now. Before I implement the code, I wanted to quickly mention that right before I started recording this, these are going to be very well. Don't quite have one for Dijkstra's algorithm right now, but hopefully next month we will. So first things first, in terms of the code, we're given a list of edges, which do have a weight, but we want to convert that into an adjacency list. So what I'm going to do is create a default dictionary where the default value is going to be a list, because for every node, we want to map it to a list of its neighbors. So I'm going to go through v1, v2, and distance in edges. There's 3 values in every single edge. We're going to say that v1 can add to it a neighbor of v2. We're going to say the same thing for the other one. So v2 can have a neighbor of v1. But remember, we want to keep track of the distance of each edge as well. We don't want to lose that information. It's going to be important. So I'm actually going to add a tuple here. If you wanted, you could add an array. I don't think it really matters whether you use an array or a tuple in Python. I think I just prefer to use a tuple because I know this is not going to change. So tuples can't be modified. And then here as well. Now next, I'm going to define my Dijkstra's algorithm, and I'm only going to give it a source because Dijkstra's is not a recursive algorithm. All we need to do is give it the source and it should be able to run. For now, I'm not going to fill it in yet. What if you don't know Dijkstra's algorithm? Well, you can still get pretty far, or maybe you're trying to remember it, you're nervous. Well, at least implement the part that you know how to do. We know, at the very least, we want to run Dijkstra's on every single source node, and the nodes are actually given to us from 0 to n-1. So I'm going to say for source in range n, and I'm going to run Dijkstra on this source node. Now, we expect this Dijkstra not to return the actual shortest paths. We expect it to return the number of nodes that this guy can reach where we stay under this distance threshold up above. So let's assume that it does that. It returns the count. Then we want to minimize that count. So I'm going to declare a couple variables up here. First, I'm going to have result. That's going to be the resulting node that we return. I'll initialize it to -1. We're also going to have a variable called min count. That's going to be the node that has the minimum count. And of course, we're trying to minimize this, so we should set it to a very big value. You could do float of infinity, but you don't even have to go that far. We know that a node can't possibly visit n different nodes. If we have n nodes, we're not going to count if a node can visit itself. So if you want to set this to a really big value, then just set it to n, because every single node will be able to reach less nodes than n. Now I'm going to say if the count was less than, but I'm not just going to say less than, I'm going to say less than or equal. And I'll explain why in just a second. I'm going to say if it's less than or equal to the minimum count, then update the result and update the minimum count. Set the result to the source, set the minimum count to the count that we just computed. Now try to guess why I did less than or equal. Consider the case where there's a tie. We're going through these nodes in order, in ascending order, right? Suppose I had a node 1
आता टाय असली तर so let's consider there is a tie. So for tie we have to consider the node that comes later one. So that's why he has written equal. It can reach two different nodes. Suppose later on I have a node 4, it can also reach two different nodes. So even though the count isn't less than the previous count, it's only less than or equal, we still favor this as the result because this has a greater value than the previous node. So this is what we would want to be the result. We can handle it like this because we're already going through the nodes in ascending order. And so if we get a case where they're equal, we would still want to update the result in that case. So that's kind of a clever way of doing it. And then of course, at this point, we would just return the result. So now notice we have literally everything except Dijkstra's algorithm. And I think that's only going to be about like 10 or 15 lines of code. It's not trivial, but it's not like a ton of code. So let's see if we can do this. With Dijkstra's, we know for sure we're going to need a heap, a minimum heap. The way to initialize that in Python is just use an array. We obviously need to keep track of the node itself, right? So you might think just add that to the heap, but that's not going to be the key of the heap. That's not the most important key. We are also going to add the distance of every particular node. AI is changing the game for app development. Firebase is here to help. Easily to the heap. So here I'll leave a comment saying the distance and the node. The distance should go first because that's the first sort key. That's what we want to prioritize, the nodes with the smallest distance. So I'm going to add Okay, so heap is a list, right? Okay. I think I am able to hear myself. Yes, I can hear you. No, I am hearing myself. Have you started YouTube at the background? No. Are you on speaker? Just change the output. Try changing the outputs. No. Are you on the speaker? Yeah, I don't see any headphone. Yes. Okay, that's no problem. No, but from starting I am on speaker only. Okay. From starting of this stream or this conference, Okay. I haven't used the... Okay, I think I spoke little loud. That's why I was able to hear myself. that here. Initially, for this source node, the distance was 0 because we started there. And I'm also going to have a visit hash set. In regular Dijkstra's, you might have like a hash map or something to actually keep track of the distance of each node, like the minimum distance, but we don't really need to do that in this problem. We don't care about the distance, or at least we don't care to return it. If visit is going to keep track of all the nodes that we can reach, starting from the source node where we stay under this threshold, if that's the case, then what should we return? Well, possibly the length of visit, but I'm also going to add a -1 because we're going to end up marking the source node as visited. We have to, but the source node doesn't count as a node that we can visit from starting at the source node. So that's where the -1 comes from. We're trying to disclude the source node in that calculation. Okay, now finally for the actual core algorithm, we're going to say while the heap is non-empty, just like you would do in a regular breadth first search, pop from the queue. The only difference is this is a priority queue. So heap queue dot, I'm forgetting stuff, heap queue dot heap pop, and given the heap, return the distance and the node, because that's exactly what we added to the heap. So once you have that, if this node has already been visited, it doesn't make sense to go through all the neighbors of that node and then push them to the heap again, because again, Dijkstra's is a greedy algorithm. Like the first time we reach a node, we assume that was the shortest path to reach that node. So we don't care about the second shortest path to reach that node. That's not really going to do anything for us. Here we're going to say if node is in visit, if it's already been visited, just continue to the next iteration. Don't do anything here. Otherwise, add it to visit so that we don't, do it again. And after that, go through the neighbors of that node
and then do some stuff. But remember, we didn't just add one value to the adjacency list, we added a pair because the distance of each edge is going to be important. I'm going to call this distance 2 because I'm not very creative, but you might have a better variable name for it. Now, we want to know the total distance. We're going to assume that this distance given to us is the total distance to reach this node. And now from this node, if we want to go to its neighbor, and if that edge has this distance, then the total distance to reach this node is going to be this. I'm going to call it neighbor distance, and it's just going to be the sum of distance 1 and distance 2. This is the tricky part. You might be very tempted to say heap q, heap push to the heap a tuple, which is the neighbor distance, and second, the neighbor node itself. You might be tempted to do this, but don't forget, we do have to stay under that threshold. So you try to guess what I'm going to do here right now. It's not super complicated. We're only going to check if the neighbor distance is less than or equal to that distance threshold. Then we are going to do this. Otherwise, if we went over the threshold, just feel free to skip that neighbor. So not bad. It looks like we got it done in about 28 lines of code, but that's not really the measure of success. We're not trying to get this to be as short as possible. We're trying to keep it readable and also relatively maintainable, which I think we did, right? We kind of modularized it. This is the part where we're building the adjacency list. This is the Dijkstra's implementation. It's a little bit augmented. We're not actually calculating the shortest paths. We're just kind of counting the number of nodes that we could visit while staying under this threshold. That's the kind of main change that we did to Dijkstra's algorithm. And then down here, we're literally just running it a bunch of times on every source node, keeping track of which one had the minimum count, and then returning it. And you can see that this solution is pretty efficient. So I'm going to go ahead and leave things there and probably go get back to work. Hope you have a good day. चांगलं होतं. I see you're interested in learning about Postgres. Why not learn from me, Dr. Chuck? Augmented. We're not actually calculating. Okay, let's try to code it up. Okay, so yeah. Are you able to see my screen? No. No. You're not seeing like neat code? It's still on YouTube. Okay, wait. I think now you should be able to see. Can you check? Yep. Yeah. Okay, let's try to do it in Python first. We will do it in C++ later. So first of all, we will have an adjacency list which will be default dict of list default for v1 v2 distance edges. So v1 v2 and distance. I think they have given okay v1 v2 and distance, right? Edges. Default dict is a function. Yeah, it converts list into dictionary. Okay. With each having some default value. I mean, each key will have. If you insert something, each key will have like a list as a default value. Okay. Means where all the values are in the format of list. Yeah. So in dot append, we will append
for v1 we will have v2 comma distance, and for adjacency of v2 we will append v1 and distance. So we have created our adjacency list. After that we will run Dijkstra algorithm. Will have a source, and we'll write it later. For now, if we have like we have shortage distance for each, right? So for that, what we will do, we will have a global variable which is minimum count, which will be equal to like I think max, right? n+1, n+1, and after that we will have result or solution equal will be -1 firstly, right? So for source in range n, what we will do is count is equal to we will return count of neighbors we can visit, right? We can, for this source, count will be the number of nodes that we can visit from this source. This will be stored in the count. After that we will check if the count is less or equal to our what min count, right? We have to update min count. So if that's the case, then we will update result is equal to src, and our min count will be count. And after that we need to compare with threshold, right? Or we are comparing. We compare it with threshold in Dijkstra while like going through. Okay. We have to do it in this definition. What we are doing after getting all the, as I said, this Possible. count, this count will keep track of number of like nodes that we can visit. So how we will calculate the number of nodes that we can visit? It will be inside like this algorithm. Are you getting my point? Yes. Yeah, and after running Because this, what? Our solution should be SRC, right? Yeah. So in Dijkstra we will have source, and how did he do heap? Heap is equal to list. Heap was list, right? And the first element was src source itself, and then distance. Okay, so then we had visited set, and it had what values? I think it had known values, right? Yeah. No, it's not given much. Okay, so while heap is not empty, what we will do, heap, firstly we had to, I think, add, Take out. so how we will do it? Take out the element and then find its adjacents.
Okay, take out the element. How we will take out? Heap Pop, pop. heap dot pop. No, I think Hip heap dot hip pop. Pop hip. heap dot heap. No, no. Hip dot. Okay. In this we will have a node and distance, right? Yes. And after that, what we will check? We will go through while. No, I I think just for. see this. Right, for neighbor comma distance, neighbor distance, right? Neighbor distance in adjacency list of source, right? No, adjacency list of node. Yeah, for adjacency list of node we had neighbor distance equal to what we had, new distance First, I guess we need to add it into the set. Popped out element. popped out element has to be Appended into the visited set. okay. And I guess there is one condition to check if it is visited or not. Okay, if node in visited, then we will continue, right? And if that's not the case, we will add it. So visited dot add node, right? Okay, is that right? So here we have to check if new distance is greater than no, less than or equal to threshold, right? Distance threshold. If that's the case, then and only then we will add it to the like uh, our heap. So heap q dot heap q push, right? Push, we will add it in the heap. And what we will add? We will add new distance and neighbor. So neighbor and new distance, and we will return. Okay, we are not in survival, so we'll return I think length of heap, and we have to remove our source, right? Source is not defined. Line 31. Heap q has no attribute. Okay, I think heap pop, and here to heap push. SRC not defined. Yeah. Source.
Okay, it is. Oh shit! What happened? Output is 4. Expected 0. Oh. Yeah. It is still not working. It's 2. Expected 5. Wait. Yeah. What did we do wrong? Firstly, we added list for v2 images, right? We dot append v2 distance, v1 distance, then while source heap had yeah, while node distance heap q heap. If node in visited continue, either we would add visited neighbor distance in address in node. New distance is equal to neighbor distance plus neighbor distance push return visited. What is wrong? What is wrong? Count is equal to register source if like count result is equal to solution and count is equal to count. Is there anything had to do with indentation? I don't think so. Indentation is the problem, right? Yeah, it is in the line of 4. We had one solution as -1 and min count was n. Okay, so the min count was n, but I don't think so. It should matter, right? I mean, we No. will use this test case. Check. It is What still is not working. error you are getting? No, it is not error. It is failing 3 test cases only. There are 54 edge cases. It is failing 3 of those. It is only passing 51 edge cases. What we did wrong? Let's compare it side by side, I guess. We are having higher counting. Okay, so okay. Defaulting heap source visited will be set while heap distance node. So we will have node in visited dot add node for neighbor. Okay, so we should add. No, we should add neighbor distance, right? Length of visited -1.
I think we like literally copy pasted the solution, but it is still not working. I don't know why. I guess do one thing. Add. Is it passing the runtime, running solutions in test cases? While submitting, it is giving error, right? Yeah, it says a wrong answer only. It there is no compilation error or something like that. 1 minute. Keep my mean count as n+1. That was right. Mean Yeah. count n+1. Yeah, we were giving it infinity, right? Maximum. Yes. Yeah, so it doesn't matter. Equals N to n+1. It cannot visit. It will at max visit n-1 nodes. Right? It will visit at max n-1 nodes. do one thing. It might be silly, but try swapping the heap elements. Means first add distance and then source. Might be silly. I don't In think heap so. That also, while before heap, after while heap, when you are popping, reverse it. And while you're pushing also, while pushing, before returning, right. काय विषय I guess heap. It will not. It should not matter. No, it should matter. The heap will keep like Okay, how it's giving priority on which it is basis? giving Distance basis on or base source? distance. We have to give like here we have to give it Okay. like so it was giving On the base priority of on the source. source. Yeah, if two like have same distance but their source is different, so that was Okay. yeah, you are right. It wasn't a silly mistake. Since it is a heap, we had to keep like yeah. Okay. I will give you code. Just a moment. Wait a minute. Yes. Yes. Okay. असं का? खायचं दाबून इथे झोपी द्या. मी काल आले जेवलेलो. 7:30 वाजता. नंतर नुसता भात खाल्ला. आल्यावरच जेवलो रे 7:30 वाजता नाही 7 वाजता जेवलो मी 2 चपात्या. आणि नंतर 10 वाजता परत भात खाल्ला.